हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लेकर आए मैट्रिक्स के नेक्स्ट 4 टॉपिक्स, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होगा एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सो लेट्स स्टार्ट विद एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, ए जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे एम क्रॉस एन से, दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी आई जे। अब यहां क्वेश्चन होगा कि इस मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए। फॉर द सेक ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर आपका सेम होगा। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस कि उनके दोनों मैट्रिसेस का हमारा जो ऑर्डर होना चाहिए इट शुड बी सेम। इसके बाद जब हम a प्लस बी लिखेंगे तो a प्लस बी में हमें मिलेगा a आई जे प्लस b आई जे m क्रॉस n। इसका मतलब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का हम एडिशन कर देंगे और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका भी ऑर्डर हमारा सेम होगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हमने मैट्रिक्स ए लिया विद द एलिमेंट्स 2 3, बी हमने कंसिडर किया विद द एलिमेंट्स 3 4 2 7। अगर आप a प्लस बी करते हैं तो पहले आपको चेक करना होगा कि हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स है, b इज ऑल्सो मैट्रिक्स ऑफ 2x2। तो जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो भी आपका 2x2 का होगा और एडिशन हम करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की। यहाँ a11 ये है, यहाँ b11 ये है, दोनों ऐड होंगे तो आपको मिलेगा 5, 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 2 6 and 1 plus 7 8। So this is how we find addition of 2 matrices. In the same way अगर हमें इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारा a माइनस बी होगा और वो जो मैट्रिक्स मिलेगा हमें ए आई जे माइनस बी आई जे और उसका भी ऑर्डर जो होगा वो m क्रॉस n होगा। मैं पहले भी बता चुका हूं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसी एग्जाम्पल में अगर हम a माइनस बी फाइंड करेंगे तो वो हमें मिलेगा 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 2 2, 1 minus 7 minus 6. So in this way we have completed these 2 topics, addition of 2 matrices, subtraction of matrices. Next हमारे पास क्वेश्चन आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन होगा कि आपको मैट्रिक्स A हमने दिया 3 4 1 2 and I'll ask you the value of 5A। दिस इज कॉल्ड योर स्केलर मल्टीप्लीकेशन की किसी मैट्रिक्स को मैं एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो यहां 5a का मतलब है ईच एलिमेंट ऑफ a इज मल्टीप्लाइड बाय 5। वी विल गेट 15 20 5 एंड 10। सो वी हैव कंप्लीटेड दीज 3 टॉपिक्स, हाउ टू एड 2 मैट्रिसेस, हाउ टू सब्ट्रैक्ट 2 मैट्रिसेस एंड हाउ टू डू द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ। So our last topic is multiplication of matrices. If A is a matrix of order m cross n and B is a matrix of order p cross q, in this case I'll say AB is defined. अब AB is defined का मतलब है कि A can be multiplied by B। A और B दोनों matrices को हम multiply कर सकते हैं if condition है n is equals to p। n is equals to p का मतलब number of columns in the first matrix is equals to number of rows in the second matrix। 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल आ जाए। इसके बाद सेकेंड पार्ट इसमें होगा ऑर्डर ऑफ ए बी कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर होगा आपका m क्रॉस q।
M क्रॉस Q का मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम्स. Let A be a matrix with elements 4, 2, 2, 3 and B is a matrix with elements 2, 6, 0, 1, 3, 2. Now let's see order of A is 2 cross 2 or order of B is 2 rows 3 columns. पहले हम चेक करेंगे कि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं है. आई टोल्ड यू नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स. पहले मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2 और सेकेंड मैट्रिक्स में मेरे पास नंबर ऑफ रोज हैं 2. दैट मीन्स मेरा मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा. इसके बाद जो ए बी मुझे मिलेगा उसका ऑर्डर मुझे मिलता है फर्स्ट के रोज और सेकेंड के कॉलम्स से. इसका मतलब ए बी जो मैट्रिक्स मुझे मिलेगा उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3. यहां से मैं रो लूंगा, यहां से मैं कॉलम्स लूंगा. 2 क्रॉस 3 मुझे मैट्रिक्स ए बी मिलेगा. 2 क्रॉस 3 का मतलब A11, A12, A13. Then I'll be having A21, A22, A23. मुझे ये 6 एलिमेंट्स फाइंड करने होंगे यूजिंग मल्टीप्लीकेशन. अब यहां थोड़ा सा ध्यान से आपको करना होगा काम कि ए बी जब आप लिखोगे फर्स्ट एलिमेंट आपके पास है A11. अभी देखिए आपने एक चीज देखा था कि रो आपने लिए थे फर्स्ट मैट्रिक्स से और कॉलम्स आपने लिए थे सेकंड मैट्रिक्स से. तो सेम एलिमेंट्स लिखते हुए आपको ध्यान रखना होगा कि A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. रो आप लेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स से और कॉलम आप लेंगे सेकंड मैट्रिक्स से. तो आपने फर्स्ट मैट्रिक्स से रो लिया, सेकंड मैट्रिक्स से कॉलम लिया. अब इनके एलिमेंट्स को हम कोरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करेंगे. 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो हमें मिला 8 प्लस इस 2 को मल्टीप्लाई किया हमने सेकेंड एलिमेंट से 1 से तो मिला 2. सेम वेज A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 24, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6. देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 multiplied by 0 is 0 and then 2 multiplied by 2 is 4. Now A21 means second row first column. 2 2s are 4 and then 3 multiplied by 1 is 3. Next we have second row second column. 6 2s are 12 and then 3 3s are 9. And the last element we have is A23 second row third column, so it is 0 and 3 2s are 6. Now you can write the final answer. 8 plus 2 10, 24 plus 6 30, then 4 and then we have 4 plus 3 7, 12 plus 9 21 and 6. This is how do we multiply 2. Next we have another example. A matrix has the order 1 cross 3 and B matrix has the order 3 cross 1. Order here we see the columns of A matrix is 3 and number of rows in the matrix B is also 3, so we can find AB. Now let's see the order of AB will come out to be 1 cross 1. 1 cross 1 means AB will contain only one element. Sometimes these types of questions confuse you in the beginning. That is the reason I am giving you this example. 1 2 5. So my answer will contain only one element and it will have first row first column. First row first column means it will have only one element. 4 2 1 1 2 5. So multiplying first element by first element I'll get 4. Second by second I'll get 4 and then third by third I'll get 5. So my answer came out to be 5 plus 4 9 plus 4 13. So this is the answer of AB. It's a special question. Matrix A is a square matrix. We need to find A square or they can ask you to find A cube also or higher powers. So always remember one thing, that higher powers of a matrix is possible only in the case of a square matrix. If we have a matrix of order 2 by 2 or 3 by 3 as per our own syllabus, then we can find the square of a matrix. Now keep in mind, if you are going to find A square, that means you are going to do A into A.
So this A into A means first matrix is your A, 3, 2, 2, 1, and the second answer will also be a matrix of order 2 by 2 only. So taking first row, first column, you will get the first element, 3 3s are 9, and then you have 2 2s are 4. Now for the second element, we will take first row, second column, 3 2s are 6, and then 2 1s are 2. Then second row, first column, 3 2s are 6, and then this 1 into 2, it is 2. Second row, second column, 2 into 2 is 4, and then 1 into 1 is 1. So my A square came out to be 9 plus 4, 13, 6 plus 2, 8, and then we have 6 plus 2, 8, 4 plus 1, 5. Fine. In the same way, if you want to find this A cube, you can do A cube, it is equals to A square into A. So you can multiply this. A square is your 13, 8, 8, 5, and then you have A as 3, 2, 2, 1. So again you can multiply it and you can find A cube. Now first row, first column, 13 into 3, 39, then 8 2s are 16. Then for the second element I have 13 to 26, and then 8 into 1, it is your 8. Then for the second row, first column, we have 8 3s are 24, and then 5 2s are 10. Then second row, second column, we have the last element, 8 2s are 16, and then 5 1s are 5. This is how do you write. Now you can write the final answer, that will be your A cube. So the final answer of A cube came out to be 55, 34, 34 and 21. So always keep in mind that higher powers of a matrix we can find only in the case when the matrix is a square matrix. And keep one thing in mind, A square if you are going to find, you have to do it as A. Have a very important question now from the exercise, that if A is this matrix 0, minus 10 alpha by 2, 10 alpha by 2, 0, and I is the identity matrix of order 2, then show that I plus A, it is equals to I minus A cos alpha minus sin alpha cos alpha. Here first of all I will simplify my left hand side. So left hand side is your I plus A. So I is the identity matrix of the order 2 by 2. So we will write it like this: 0 1 1 0 0 1 plus A is my this matrix. I'll take 0 minus T. I'll take this 10 alpha by 2 equals to T. And then I have T 0. So my LHS came out to be what? 1 minus T, then T 0, 1 plus 0 is 1. This is the value of your left hand side. Now in the right hand side, the first part that you have is I minus A. So I minus A I'll find first of all. I minus A means 1 0 0 1 minus A is yours 0 minus T 0. So this came out to be 1. This minus will become plus T, and this minus T, and then 1 minus 0 is 1. The second part that you have here is your cos alpha minus sin alpha cos alpha. This is to be multiplied by this part. So here I'll use a formula. Cos theta has the formula 1 minus tan square theta by 2 upon 1 plus tan square theta by 2. And sin theta has a formula 2 tan theta by 2 upon
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये दो रिजल्ट्स हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं जो हम यहां यूज करेंगे। अब देखिए राइट हैंड साइड हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। दिस I minus A, I plus A I have done. This is 1t minus t 1. Now this cos alpha will become 1 minus tan square alpha by 2. That means 1 minus t square upon 1 plus t square. And this minus sin alpha will become minus 2t upon 1 plus t square. This sin alpha 2t upon 1 plus t square. And the last cos alpha will be 1 minus t square upon 1 plus t square. Now I'll multiply these two. Just see what I'll get. First row, first column. So 1 multiplied by this, I'll get 1 minus t square upon 1 plus t square. And then t multiplied by this will give me 2t square upon 1 plus t square. Now first row, second column, I'll be having minus 2t upon 1 plus t square. And this t multiplied by this, I'll get plus t minus t cube upon 1 plus t square. Now then second row, first column, minus t multiplied by this, that will give you minus t and then plus t square upon 1 plus t square. And then 1 multiplied by this will give you plus 2t upon 1 plus t square. Now second row, second column, I'll be having 2t square upon 1 plus t square. And then 1 multiplied by this will give me 1 minus t square upon 1 plus t square. So after taking LCM, we will get 1 plus t square upon 1 plus t square here. It will cancel out. We will get 1. This you have t plus t cube. So if you will take t common here, you will get inside 1 plus t square upon 1 plus t square. This again you will cancel out. So you will get here minus t. Here again you will take t common. So if you take t common, you will get 1 plus t square inside, and in the denominator also you have 1 plus t square cancelled. You will get t, and this part will cancel out. You will get 1. So my final answer came out to be 1 minus t, and then you have t and 1, which is equals to your left hand side. So from here I can say that my question is proved. So this is your all about multiplication of two matrices. Fine. So we have completed 4 topics, and with the help of this you can finish off your second exercise of matrices.